there class on Sunday? No, there was no class on Sunday. Sunday I took a leave. Okay. To start. So alkane was done. The next is alkene. So please write the heading. Alkene, and the general formula for alkene is CnH2n, right? CnH2n. Now hydrocarbon. How can you identify alkene? Hydrocarbon with at least one double bond. With at least one double bond. Now, again, we will start with the method of preparation of alkenes. Please write MOP of alkenes. In this, please write number one, the first topic, from alkynes. From alkynes. Now, in alkynes, there are two methods of preparation. Please see. We have carbon, triple bond carbon. So alkyne is known by what? The triple bond. Let us suppose there is some R1 group attached to this first carbon atom, and some R2 group attached to the second carbon atom. Now, the two reagents that we can use is H2 in the presence of palladium over charcoal, and this would give you cis-alkene. Cis-alkene means the hydrogen will be on the same side for both the carbon atoms. No carbon atom में hydrogen same side में है, और यहाँ पे R1 and R2 are as it is, right? So this is known as cis-alkene. But if you use sodium in the presence of liquid ammonia, then we get transalkene, and in transalkene we have R1. This carbon would have here hydrogen. Here this would have hydrogen, and here you will have R2. So this is known as transalkene. You got the differentiation of please tell me guys? Same side Yes, of sir. डबल बॉन्ड के सेम साइड है ना, सो यू विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द डबल लाइन, ऐसे करके सेम साइड में अगर हाइड्रोजन है दैट मींस इट इज सिस. इफ द हाइड्रोजन इज टॉप एंड बिलो, दोनों कार्बन में अपोजिट साइड्स में है, दैट मींस इट इज ट्रांसएल्कीन. प्लीज राइट दिस डाउन. Waiting for Alia, Noha and Harsha. So it's liquid NH3, right? Yeah, liquid ammonia, liquid NH3. Done. ठीक है. So चलिए please let us see. There are few cases only, है ना. Alkyne के केस में आपको कुछ ही reactions याद रखने पड़ेंगे. So if you see, we can have a first very initial case in which you have CH triply bonded with CH. दोनों में प्रोडक्ट देखते हैं. If you are adding H2 in the presence of palladium over charcoal, and the other one is sodium in the presence of liquid ammonia. Now, in the first case, what you can have? C double bond C सबसे पहले लिखिएगा. And what are the groups attached already? You have hydrogen, hydrogen, and here also hydrogen, hydrogen. Right? In the case of liquid ammonia also, you have C double bond C, hydrogen here, hydrogen here, hydrogen here, and hydrogen here. So in both the cases, you are getting the same compounds. यहाँ पे cis और trans नहीं है, right? Both of these are same. Can you see that? Yes or no? Please tell me. Yes, sir.
Both of these are what? Ethene. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. बात समझ आ रही है? Yes. ठीक है. Now please see. Give me a second. Now let us suppose अब आपके पास एक कार्बन पे CH3 है. One is having hydrogen and the other one is having CH3. तो इस पहले वाले कार्बन पे CH3 लगा हुआ है. So what will be the change? बस चेंज यहाँ पे आएगा. Here you will have CH3, right? Now दूसरे केस में आपके पास यहाँ पे CH3. There will be no change ना. बाकी कुछ तो चेंज नहीं होगा. बस एक हाइड्रोजन के अलावा CH3 है. Now both of these carbon are also same. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Make sense? ठीक है. Now in this case what you will be having, इसमें यहाँ पे this is propene, or you can write prop 1E. Fine. Now the last case in which you can have something different. I will give you time to write, so you guys don't worry. ठीक है. Don't be in a hurry to write. पहले समझिए चीजों को. Another case would be if you have CH3 here, and you have carbon and then again CH3. Now here the change would be occurring. In the cis case, that means in the presence of H2PD, both the CH3s will be on the top and hydrogen will be on the down. And here one CH3 will be on the top and the other CH3 will be in the bottom. So this is how many carbon atoms? 4 carbon atoms, and the double bond is the second carbon. इसको बोलते हैं cis but 2E, and this is trans but 2E. Please write this down. Raise your hand once you're done. Waiting for Alia, Noha and Harsha. मरियम आप लिख नहीं रहे हैं क्या, या फिर आपने रिकॉर्डिंग देख ली दूसरे बैच की? No, sir. I just wrote it. अच्छा, you wrote it. Just waiting for Harsha now.
Now, the next method of preparation is, please write, from alkyl halides. From alkyl halides. Okay. Now, this reaction, it is also known as, please write, dehydrohalogenation. And it is also known as beta elimination. It is a type of elimination reaction. पिछले वाला जो था, it was a type of addition reaction. So basically what happens is you should have a carbon with one hydrogen, which is attached with carbon and a halogen. Halogen means halogen is generated by X, है ना? यहाँ पे X क्या हो सकता है? It can be chlorine, fluorine, bromine, anything. Right? Now this carbon, अभी हम इसको hydrogen दे रहे हैं, but it should have at least one hydrogen. That's it. है ना? Now, what happens? You react this with alcoholic KOH. Alcoholic KOH. Now, can you tell me whether KOH will be acidic or basic? Guys, tell me. Acidic or basic? Basic. Basic. है ना? और बेस का काम होता है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, to take hydrogen. So what happens? The base from here, the OH negative, it attacks on this hydrogen atom. Now this hydrogen is special because this carbon will be alpha carbon. I hope you guys know what is alpha. Alpha carbon is the carbon which is directly attached to the functional group, है ना? And this halogen is a functional group. And this carbon, it is a beta carbon. So the beta carbon, it loses the hydrogen. Now since OH negative is attacking on hydrogen, hydrogen को electron लेके जाने की जरूरत नहीं है. Hydrogen will give the electron. So hydrogen gives the electron here, and as the hydrogen gives electron to this carbon, it forms a double bond, and this carbon says, I already have 4 bonds, so it breaks the bond with halogen atom like this, right? So what you will be getting is, see, the beta carbon is losing one hydrogen, so carbon with 2 hydrogens are remaining. There is a double bond between the 2 carbon atoms, and the alpha carbon is losing the halogen atom, so it will be also having CH2. Plus you will get H2O. OH negative attacks on hydrogen, so it will be H2O, and you will get KX, potassium halide. Now these two are not very important. This is important, that you are getting an alkene. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the basic way of writing this particular reaction or the product of this reaction is, you will be given something like this. Let us suppose you have a Br here. Okay. So you don't have to worry about the product right now. You have to worry about, see, you go in steps. अगर आप प्रोडक्ट कीजिएगा तो प्रोडक्ट नहीं आएगा कभी भी, ठीक है? सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द अल्फा कार्बन. दिस विल कम विद प्रैक्टिस, ओके? सो डोंट बी हेजिटेंट इन प्रैक्टिसिंग. दिस विल बी अल्फा, राइट? एंड दिस विल बी बीटा. So if you have been given a bond line structure, then it becomes very easy. Just remove the halide, that is bromine, from here and make a double bond between alpha and beta carbon. As easy as it can be. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes. सही है? Yes. अब देखिए, let's suppose that they have not given you in bond line structure, they have given you something like CH3, single bond to CH2, singly bonded to CH2, and then you have the Br. Here also you will start with the alpha carbon, identification of alpha. This is the alpha carbon, and this is the beta carbon. Here also you have to do the same thing. You will remove the bromine from alpha and hydrogen from beta. So CH3, single bond, you remove the hydrogen from beta, it will be CH, single bond, you remove the bromine from the alpha, so it will be CH2, and a double bond between alpha and beta. So it is as simple, but bond line structure में आपको बनाने में ज्यादा आसानी होगी. Does it make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, if you look closely, let us suppose we have something like this. We have bromine here. Now, when you identify the alpha, this would be alpha. Now, this alpha carbon is connected to 2 beta carbons. So this is a beta 1, let us suppose, and this is the beta 2. I hope you guys can see this. Yes or no? Please tell me, guys. Yes. Beta 1 and beta 2. No problem in that, no? You can identify the 2 beta. I need a yes, sir, or a no, sir. Yes, Guys? sir. Right.
See, the carbon which is directly connected to alpha carbon is the beta carbon, directly connected to the alpha carbon. ठीक है ना? For example, this carbon is not beta because it is not directly connected to alpha. इसके बाद बीटा है, बीटा के बाद फिर अल्फा है ना, so there is a carbon in between. ठीक है, that's why this is not beta carbon. इसी तरह से यहाँ रखिएगा. So here we have two beta carbons. Now you can either make a carbon with alpha and beta 2, or you can have something like this, alpha and beta 1. But both of these structures are same. They're not different. Both of these are what? Propene. Rather, it is prop 1e. But the difficulty would come when you have two different betas. Or rather, you get two different products from the beta carbon. So see here, you have bromine. Now, if you identify the alpha, see, I am taking bromine. It's my habit. है ना? You can have chlorine, you can have iodine also. Fluorine generally नहीं लेते हैं. ठीक है, fluorine is not taken here. So here you have alpha carbon, and this is the beta 1, and this is the beta 2. Sir, how are they different if you ask me? Then I will say just see the degree of beta 1. Beta 1 is 1 degree carbon and beta 2 is 2 degree carbon. You guys know how to identify 1 degree carbon and 2 degree carbon? Yes or no? Please tell me. Yes. Yes, sir. Yes, na? So I hope you can see that beta 1, it is only attached with one carbon. Beta 2 is attached with two different carbon atoms. Okay. So now here you will get two products. Okay, I need some space here. Please don't write अभी, है ना? इसको ध्यान से सुनते रहिए, उसके बाद आप एक साथ लिख लीजिएगा. 1, 2, 3, 4. First of all, you make a double bond with beta 1, और दूसरा आपका प्रोडक्ट जो मिलेगा that will be a double bond with beta 2. Now, which is more degree? Beta 1 या beta 2? कहाँ पे? Which is the higher degree carbon? Beta 2. Beta 2. So that will be major. And this will be minor. याद रहेगा? Yes or no? Please tell me. Yes. So please write this down. You have written this topic now from alkyl halide, dehydrohalogenation, and beta elimination. यहाँ पे एक और ना आप लाइन लिख दीजिएगा. जस्ट गिव मी अ सेकंड. Remove the halogen from alpha and hydrogen from beta and form alpha double bond beta. ठीक है.
Please raise your hand once you're done. Just waiting for Noha. Noha, raise your hand once you're done. Yeah, fine. ठीक है, तो क्या करना है जरा बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू गाइस, टेल मी, टर्न योर माइक ऑन एंड टेल मी. सबसे पहले क्या करेंगे? व्हाट यू विल आइडेंटिफाई? टेल The मी गाइस, alpha व्हाट विल यू? carbon. Alpha carbon, Beta carbon. and then Remove the hydrogen. नहीं. आप लोग को उसके बाद बीटा अगर एक से ज्यादा है, ठीक है, वही दिक्कत आएगी सबसे ज्यादा. यू विल हैव टू सी वेदर यू हैव वन बीटा और मोर देन वन बीटा. इफ यू हैव मोर देन वन बीटा, देन यू विल फाइंड द डिग्री, है ना? Yes. है ना? एंड इफ ऑल द बीटा कार्बन्स आर सेम, तो फिर आप उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बट इफ द डिग्री इज डिफरेंट, देन यू विल दोनों प्रोडक्ट बनाइएगा, और जो ज्यादा डिग्री वाला होगा दैट विल बी मेजर. मेक सेंस? ड्रॉ दी मेजर प्रोडक्ट्स. नहीं, ड्रॉ दी प्रोडक्ट्स फॉर फॉलोइंग. मेजर सारे प्रोडक्ट है. ड्रॉ दी प्रोडक्ट्स फॉर फॉलोइंग and identify major and minor. Read the first question. देखिए, हमको ना प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है. आप अगर देखिए डायरेक्टली अगर आपको एकदम कॉन्फिडेंटली प्रोडक्ट लिख पा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है. बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि आपके यहाँ पे रिएक्टेंट में अल्फा, बीटा, बीटा वन, बीटा टू, डिग्री, ये सारी चीजें ना हमें दिखनी चाहिए. आई नीड टू सी द वर्क. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, तभी पता चलेगी ना कि आपको डिफिकल्टी और गलती कहाँ पे हो रही है. कि आपको अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई करने नहीं आ रहा है, या फिर आपको बीटा कार्बन आइडेंटिफाई करने नहीं आ रहा है, या फिर आपको डिग्री निकालना नहीं आ रहा है. कैसे पता चलेगा? आई विल अंडरस्टैंड ओनली इफ आई सी व्हाट वर्क यू हैव डन. चलिए, ट्राई दीज थ्री and then send your answer on my WhatsApp.
आर यू गाइस हैविंग डिफिकल्टी? प्लीज लेट मी नो ना। देखिए, आप ज्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं है, कुछ चीजें तो आपको आनी चाहिए। अल्फा कार्बन, बीटा की डिग्री क्या है, उतना करके कम से कम आपको भेजिए, है ना। अगर प्रोडक्ट आपको नहीं भी बनाने आ रहा है, देन ऑल्सो डोंट वरी। Yeah, I have sent. I have submitted your answer. Yep, correct. First one is correct. Alpha, beta, degree correct. Major, minor correct. Very good. Second case, yeah, very good. Third case, alpha, beta, and beta. Fine. No difficulty, Harsha? Okay, so whatever carbon is connected to the halogen is the alpha carbon. Yep, that is the alpha carbon. Okay. Okay, Noha, looking at your answer. अच्छा, प्रोडक्ट बनाने नहीं आ रहा आपको, नोहा? No, sir. ठीक है, तो प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना है, आपको हाइड्रोजन हटा देना है। ठीक है, फाइन। अरे यस सर, नो सर तो बोलो। Yes, sir. यू मेक द रिएक्टेंट एज इट इज एक्सेप्ट द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और उसके बाद इफ यू हैव वन बीटा कार्बन, तो आप एक प्रोडक्ट बनाइएगा, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। अगर दो बीटा कार्बन है तो दो प्रोडक्ट रहेंगे, और उसमें मतलब पहले वाले में एक अल्फा, जैसे ये आपने देखा या नहीं देखा, आई डोंट नो। यू सॉ दिस वन ना? Yes, sir. So in this, what did I do? In the first product that I have written here, this is alpha यहाँ पे था, and this was the beta, तो alpha beta में double bond, दूसरा बीटा alpha and दूसरे बीटा के बीच में double bond. That's it, you have to do. Okay, sir. Try कीजिए जरा, है ना, हो जाएगा, don't worry. Whatever you have done till now, it is correct. Yes. नहीं मरियम, आपने तो रिएक्ट ये देखिए जरा, दिस रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट यू हैव मेड, प्रोडक्ट में थोड़ी गलती है ना, देखिए जरा, स्मॉल मिस्टेक मरियम। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, करेक्ट कर लीजिए, अच्छा, आलिया कैन यू प्लीज टर्न द कैमरा ऑन? Yes, sir. Do you want me to show? हाँ, आई वांट यू टू शो द कैमरा, या जस्ट गिव मी अ सेकंड। Wait, just hold it like that. Yeah, first one is correct, second one is fine. Yep, third one is also fine. Yeah, very good, Ali.
Okay, no conducting material also. Yes, that's it. Very good. That's correct. Okay. See here, guys. So in the first one, we'll identify the alpha carbon. This is the beta 1. This is the beta 2. Beta 1 is 1 degree. Beta 2 is 3 degree. So we will get two product, 1, 2, like this, and between alpha and beta. So this will be minor, plus we will get 2, 3, 4, everything as it is except the chlorine. And alpha and beta 2, this will be major. Now in this you can see that here is my alpha, this beta and this beta, both of them are same. Both of these are 2 degree and completely same. So you can make two product, but that's really not two product but a single product. No major or minor here. In this case, this is my alpha carbon, this is my beta 1, and this is my beta 2. Beta 1 is 2 degree, beta 2 is 3 degree. So in the minor, I will make everything as it is except the iodine, and I make alpha and beta 1, whichever, because it is 2 degree. And then we have the second product in which I'll make the alpha and beta 2 bond, everything as it is first of all, and then alpha and beta 2. Okay, so this is the method of preparation of alkenes from alkyl halide. Now, as we have seen the alpha, beta, and we have developed a particular, we can say that we have developed a rule that what will be the major product? The major product is where we have higher degree of carbon atoms. But initially, when this particular reaction was done, the bond line structure was not there. And the bond line structure was still in development. People were not using bond line structure, rather they were using carbon and hydrogen. So the rule was given in accordance to the number of hydrogens. Okay, in accordance to the number of hydrogens, and it was also given in accordance to the substitution of alkene. ठीक है कि alkene में कितने alkyl groups लगे हुए. So if you see the minor product ना, तो minor product में यहाँ पे देखिएगा. So here we have two carbon atoms. इस carbon में तो कोई alkyl group नहीं लगा हुआ है. But this carbon atom, it is having one alkyl group. ठीक है, only one alkyl. ये ध्यान रखिए, एक बॉन्ड निकल रहा है इनसे, एक alkyl group. Now if you look at this major product that we have made, आपके पास एक कार्बन ये रेड वाला कार्बन है और दूसरा कार्बन ये ब्लू वाला कार्बन. Now the red carbon has one alkyl group, the blue carbon has two alkyl group. So in total here we have three alkyl groups in the alkene. Now here the second one we don't have any major or minor. Let's look at the case of third one. Here if I look at this blue carbon atom, it is having one alkyl group. कितना देखिए, एक बॉन्ड निकल रहा है यहाँ से, एक alkyl group. And this one is also having one alkyl group, as you can see, because there is one bond coming out from here, one alkyl group. If you look at the major product, here you can see that this carbon atom, it is having two alkyl groups, and this particular carbon atom, it is having one alkyl group. So in total, it is having only two alkyl groups, and this is having three alkyl groups. So there was a scientist, a Russian scientist, whose name is written as Zaitsev but pronounced as Setzev, Saytzeff, Setzev. He gave a rule. इसका असली नाम है ऐसे, मतलब लिखा है ऐसे जाता है, I don't know why, but it is pronounced Setzev. Okay, Zaitsev नाम था उसका, ऐसे लिखा. I don't know what goes on in Russia, but this is how you pronounce the name. This is how you write the name. Okay, so Setzev rule, it said that more substituted alkene is more stable. Therefore, it is the major product. It is the major product in beta elimination. In beta elimination. Fine. Now, you don't have to like write the product according to the Setzeff rule. आपको Setzeff rule more substituted कौन सा होगा, ऐसे सोच के नहीं करना है. You just follow what I have taught you guys right now. ठीक है, अल्फा बीटा 1 degree 2 degree. ठीक है, बिल्कुल वहां पे कोई गलती नहीं होगी आपसे. Then you write a remark. Is like rate of dehydrohalogenation. Rate of dehydrogenation
halogenation. In this, if you have alkyl iodide, this will be fastest, followed by alkyl bromide, followed by alkyl chloride. And that means the alkyl group should be C, है ना? यानी कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से you have Br here, sorry, suppose you have iodine, तो iodine वाला fastest होगा, followed by the Br, and then followed by chlorine. Now, if I look at the alkyl group, then in alkyl group I would say 3 degree is fastest, followed by 2 degree, and then followed by 1 degree. So for example, if you have 1, 2, 3, 4 carbon atoms attached with bromine, so this is 1, 3, 4, and if you have bromine here, this is 2 degree alkyl halide. You have 1, 2, 3, and another carbon atom here, and then you have bromine here. So this is 3 degree. So this will be fastest, followed by 2 degree, and then followed by 1 degree. Please write it down. ये समझ में आया ना आप लोगों को? हाँ जी. Yes, sir. अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, सिंस वी आर रिमूविंग हाइड्रोजन एंड हैलोजन, इसी वजह से क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हैलोजनेशन. हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है. मेक सेंस गाइस? यस और नो? प्लीज टेल मी. Yes, sir. प्लीज राइट दिस डाउन. The last line, the degrees of the beta carbon, right? नहीं, अल्फा अल्फा अल्फा. असल में ब्रोमीन भी तो निकल ही रहा है ना. So, but while doing, we check the degree for the beta carbon, right? या दैट इज ट्रू, दैट इज करेक्ट, बट ये चीज आप ध्यान दीजिए, बीटा की डिग्री तभी देख रहे हैं हम लोग जब बीटा अलग अलग है ना. Yes. सी इट्स नॉट, क्योंकि अल्फा से तो निकलना ही निकलना है. बीटा से, इस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा या उस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, वहां पे सवाल है. ठीक है, बट Yes. अल्फा से तो हमेशा निकल रहा है ना. मेक सेंस? Okay, sir. ठीक है, अल्फा से हमेशा निकलेगा. So that is why we have to look at the alpha. And basically the other thing is that in comparison आपको alpha ही को compare करना पड़ेगा. Whenever you have to compare, you not have to compare the beta. Raise your hand once you're done. Understand? Right. Next, that is from alcohols. Yeah, आपका second, right? The third one. From alcohols. This is very similar to the one that we have done right now. Alcohols में will be dehydration. That means water molecule का removal होगा. Dehydration.
you will see that it is very similar to what we have done right now. We'll have carbon atom, and this carbon atom should have at least one hydrogen. But since we are making alkenes, यहाँ पे बाकी भी hydrogen ही रहने चाहिए because we are dealing with hydrocarbons only. ठीक है, तो carbon, and then this carbon will have one OH group, and the rest two atoms are hydrogens again. Now here we will be adding acid in the presence of a bit of heat, and this will give you, once again, this OH will leave hydrogen from here and OH from here. So you'll get CH2 double bond CH2, plus you will get a water molecule. The same thing happens here also. For example, if you have OH here, you'll identify the alpha carbon, then you will identify the beta 1, so the beta 2. This beta 1 is 1 degree, this beta 2 is 2 degree. So you will make two different products, H plus and heat, and you'll get everything except the OH. You'll make everything except the OH, और फिर एक में alpha और beta 1 के साथ bond, और दूसरे में alpha और beta 2 के साथ bond. So obviously alpha and beta 1 is minor because the degree is less here, and this will be major. Okay. So from alcohol, and we will write this reaction follows Set-Zef rule. Next thing, that अगर हम रेट की बात करें, rate of reaction, so obviously OH तो change नहीं होने वाला, वहां पे halogen change हो रहा था, fluorine, fluorine, bromine. So here only the alkyl group will change. So again the rate is fastest for 3 degree, followed by 2 degree, and then followed by 1 degree. Raise your hand once you're done. एल्कीन का मामला बड़ा ही खूबसूरत है। आप लोग देख रहे हैं सब में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन, एडिशन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है ना। सिमिलर चीजें आप देखिएगा, मतलब इन द केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो यू विल सी सिमिलर थिंग्स। एक रिएक्शन हुआ जिसमें हम लोग पानी डालेंगे, जैसे पानी निकला है अभी तो पानी डालेंगे। एक में डीहाइड्रो हैलोजिनेशन हुआ है तो वहां पे हाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, HX को ऐड करेंगे। ठीक है, सो इट इज लाइक कंप्लीटली सिमेट्रिकल, बहुत सिमेट्रिकल है। अगर आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद है तो आप साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी साथ ही साथ याद कर सकते हैं। इन सिंगल पेज यू कैन राइट ऑल द रिएक्शंस फॉर एल्कीन्स, मतलब मेजर रिएक्शंस, नॉट ऑल बट मेजर रिएक्शंस। वेटिंग फॉर मरियम, नोहा एंड हर्षा। कर लेंगे ना अल्कोहल वाला भी, सिमिलर ही है ना बिल्कुल, देखिए परेशानी नहीं होगी ना। Yes, sir. ठीक है, and then we'll write the last method of preparation from vicinal dihalide. From vicinal dihalide. ठीक है, उसके बाद ये vicinal dihalide क्या होता है? So when you have two halogens attached to adjacent carbon atoms, इस तरह से। ठीक है, तो vicinity जानते हैं, आसपास ना, vicinity आसपास बोलते हैं, vicinal वही है, vicinal dihalide. So you will have halogen atoms attached on adjacent carbon atoms. ठीक, so what are the reagents that we are going to use here? So please see, for example, if you have 1, 2, so here we have Br and here we have Br. How many carbon atoms are here in this compound? Tell me, guys. How many carbon atoms here? 2. 2 है ना, सही, 4 नहीं है, ठीक है, 2 ही है. So when you add zinc here, then you will get an alkene of 2 carbons, CH2 double bond CH2. You'll get alkene of 2 carbons, CH2 double bond CH2. As you can see, यहाँ पे dehalogenation हो रहा है, dehalogenation, हाइड्रोजन निकल रहा है, Br और Br निकल रहा है, and you will make Zn Br whole twice.
I think this is not a difficult. This is one of the easiest method of preparation. In the sense, पेपर में easy है, लेकिन अक्सर जो चीज पेपर में easy होती है ना, उसको लैब में करना मुश्किल होता है. तो जहां जहां हाइड्रोजन है वहां से आप हाइड्रोजन निकालिएगा and you will attach double bond in those two carbon atoms. Cl, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे, जिंक, so we'll make the cyclopentane as it is, और जिन दो कार्बन में क्लोरीन था उसमें डबल बॉन्ड डाल दिया प्लस ZnCl2. चलिए प्लीज कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड डाउन. बस ये ना, इसको प्रैक्टिस थोड़ा करते रहिएगा तो आप लोग के दिमाग से उतरे, अदरवाइज इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ रिमेम्बरिंग द रिएक्शन, है ना. Where the halogens can be anywhere on both the atoms, right? Anywhere on both the atoms. I don't. Adjacent carbon पे ही रहना चाहिए. So like if one halogen is on one side and the other on the other side of the carbon atom. ओ अच्छा अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे. Yes, sir. हाँ, इट्स सेम थिंग. दिस बॉन्ड ना, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था आपको, सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट. याद है आप लोग को, हमने ऐसे वो जो एक इमोजी नहीं होता जिसमें उंगली टच हो रही होती है, वो हमने कराया था, राइट. Yeah. Yes. है ना. तो बेसिकली, और दूसरी चीज, ये 90 डिग्रीज में तो होता नहीं है, टेट्राहेड्रल इस तरह से होता है. एक्स सॉरी, इधर होगा, दीज टू बॉन्ड्स विल बी हियर, है ना. एंड दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इट इज रोटेटेबल, ये रोटेट हो सकता है. सो जो एक्स आपको अभी यहाँ दिख रहा है, इट विल बी हियर, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ. इट मेक्स अराउंड सम lakh rotation per second, some thousand or some 10,000 to lakh rotation per second. ठीक है, so it doesn't really matter, कहीं भी हो सकता है. Just waiting for Alia. Alia, please raise your hand if you're done. ठीक है, अब इसके बाद आपके पास है द केमिकल प्रॉपर्टीज. देखिए यहाँ पे आई हैव स्किप्ड वन टॉपिक, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. इट इज बिकॉज इट इज सेम एज दैट ऑफ एल्कीन्स, है. और जो डिफरेंस है ना, थोड़ा सा जो अलग है एल्कीन से, वो आएगा जब हम लोग बात करेंगे सिस और ट्रांस आइसोमर के बारे में. ठीक है, सो सिस ट्रांस आइसोमर्स, conformers of alkenes and aromaticity, these are three topics that I teach in one class.
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी आप रहने दीजिए, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है, हम पढ़ाएंगे. नाउ यू राइट केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ इन केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन. ये रिएक्शन ना शायद आप लोगों ने देखा है जब हम लोग एल्कीन के एमओपी कर रहे थे ना, इट्स आल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन. Hydrogenation. So when we were doing the method of preparation of hydrogen, method of preparation of alkenes, then we saw that when you have CH2, double bond CH2, you react this with hydrogen in the presence of palladium over charcoal, then you will get CH3. याद आया? You just need to remove the double bond. एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे. याद आया नहीं याद आया? Tell me guys. You can also use catalyst such as nickel और आपको एक एल्केन मिल जाएगा. नहीं भाई, नहीं याद आ रहा है क्या किसी को? कोई नहीं था क्या क्लास में? नोहा तो होगी. नोहा इज क्वाइट रेगुलर इन दीज डेज. नोहा, यू रिमेंबर दिस? यस सर. है ना, ठीक है. प्लीज राइट. इट फॉर्म्स, क्या मिलता है इससे? फॉर्म्स एल्केन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इसकी एक लिमिटेशन भी हम लोगों ने लिखी थी, दैट इट कैन नॉट फॉर्म मीथेन बिकॉज एल्कीन से स्टार्ट करना है. सो एल्कीन में दो कार्बन एटलीस्ट होंगे ही होंगे. दैट इज व्हाई वी कैन नॉट हैव मीथेन. यू कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर MOP. चलिए प्लीज राइट दिस डाउन. नेक्स्ट है आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि आप X2 ऐड करेंगे, Cl2 Br2 इस तरह से. इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन. तो जैसे आपने दो हाइड्रोजन को हटाया तो एल्कीन बना था, है ना. कहां से हटाया था? विसिनल डाइहाइलाइड से. तो एल्कीन में दो हाइड्रोजन को डाल देंगे, इट विल गिव यू व्हाट? विसिनल डाइहाइलाइड. यू राइट फॉर्म्स विसिनल डाइहाइलाइड. आसान है ना रिएक्शंस? कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ डबल बॉन्ड हियर, यहाँ पे आपके इस तरह डबल बॉन्ड है, प्लस यू आर एडिंग क्लोरीन. आप क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? इधर क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन. मेक सेंस? yes or no? Please tell me guys. यस सर. ठीक है. यहाँ पे एक जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन is used as a test for distinction between saturated and unsaturated hydrocarbon. ठीक है. So if you have unsaturated hydrocarbon, that means alkene या alkyne हो अगर आपके पास, alkene और alkyne, और इसमें आप डालें ब्रोमीन वाटर दैट इज Br2 aqueous. तो यहाँ पे ब्रोमीन वाटर का जो रंग रहता है दैट इज रेडिश ब्राउन. रेडिश ब्राउन. अच्छा, अब किताब में ना ब्राउनिश रेड रहेगा तो हमसे लड़िएगा मत, ठीक है. रेडिश ब्राउन और ब्राउनिश रेड में क्या ही फर्क होगा? ठीक. तो Br2 दैट इज रेडिश ब्राउन. तो व्हेन यू ऐड alkene or alkyne, the reddish brown color disappears. Color disappears. Disappears. ठीक है. But if you have alkene plus Br2 aqueous,
then in this case, color does not disappear. Color doesn't disappear. क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन देता ही नहीं, does not give the reaction. ठीक है, so alkene और alkyne give the positive test for bromination. तो होता क्या एक्चुअली? Let us suppose you have an alkene like this. When we add Br2 aqueous here, then the double bond में bromine adds up. अब क्योंकि Br2 की वजह से रेडिश ब्राउन था, तो Br2 तो रिएक्ट कर गया, Br2 तो बचा ही नहीं, है ना? Now Br2 is not left, तो रेडिश ब्राउन कलर भी क्यों बचेगा? वो भी नहीं बचेगा. Similar reaction is given by a triple bond also. ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? You will have carbon, triple bond carbon. Let's suppose here you have H and H plus Br2 aqueous. ये आपको देगा bromine bonded to CH, double bond to CH and further bonded to bromine. ठीक है, please write this down. Raise your hand once you're done. Waiting for Mariam and Noha. Right, next. Addition of hydrogen halide. Addition of hydrogen halide. ठीक है, हाइड्रोजन हाइलाइड का मतलब क्या है? HX. अब HX में आपको जनरली HBr ही दिखेगा, यू नॉट सी एनीथिंग एल्स. HX में आपको जनरली HBr ही दिखेगा. फाइन. अब यहाँ पे आपके पास ना दो डिफरेंट वेज है, दो डिफरेंट मेथड्स है. सो उसको जरा देख लीजिए. जब आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन, आई होप यू कैन सी व्हाई इट इज अनसिमेट्रिकल, बिकॉज डबल बॉन्ड की इस तरफ एक कार्बन, इस तरफ 0 कार्बन. मेक सेंस? सो प्लीज टेल मी गाइस. बात समझ में आ रही है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन. Yes, sir. नहीं Yes, sir. आया ना? अगर आप ऐसे यहाँ पे देखिए, डबल बॉन्ड को ले लीजिए, ऐसे डबल बॉन्ड हो गया, इसके इधर एक कार्बन है, इसके इधर एक भी कार्बन नहीं है, राइट? दिस इज अनसिमेट्रिकल. बट इफ यू सी समथिंग लाइक दिस, फॉर एग्जांपल यू हैव ब्यूट-2-ene. ब्यूट-2-ene में क्या होगा? यू हैव समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन. कैन यू सी दैट? Yes, sir. बोलो. Yes, sir. Yes, है sir. ना? उसी तरह से अगर आपके पास कोई साइक्लो एल्कीन हुआ इन विच यू हैव ओनली डबल बॉन्ड, एक बस इस तरह से, so this is also what? Symmetrical. Make sense? ठीक है, तो जब सिमेट्रिकल हुआ तब तो आपके पास कोई दिक्कत की बात नहीं. वहां पे कहीं पे आप हाइड्रोजन डालिए, कहीं पे भी आप हाइड्रोजन डाल दीजिए, इट्स गोइंग टू बी सेम थिंग. बट व्हेन यू हैव अ डबल बॉन्ड लाइक दिस, तो यहाँ पे दो डिफरेंट मेथड है इन विच यू कैन ऐड HX. इफ यू ऐड द हाइड्रोजन हैलाइड, ओनली द हाइड्रोजन हैलाइड, HX लाइक दिस, नथिंग एल्स. और दूसरा है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्पर. हेल्पर याद है आप लोग? हेल्पर सुना सुना लग रहा है? टेल मी गाइस. नोहा, हर्षा. नोहा एंड हर्षा. Yes, sir. मरियम, आपने शायद सुना है हेल्पर. होमोलिटिक क्लीवेज के लिए फ्री रेडिकल बनता है इससे, Yes, sir. है ना? नोहा, यू रिमेम्बर इट? Yes, sir. यस. ठीक है ना. एक तो HX, इसको बेसिकली बोलते हैं व्हेन वी डू हाइड्रोहालोजनेशन इन डार्क. ठीक है, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे. एक बार क्या होगा, हाइड्रोजन विल अटैच ऑन दी एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में, और दूसरा इधर अटैच होगा. फाइन. नाउ दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री. तो व्हेन यू आर डूइंग इट इन डार्क, देन द 2 डिग्री विल बी मेजर और ये वाला हो जाएगा माइनर. इन द हेल्पर केस जनरली यहाँ पे peroxide होगा. You can have heat, electricity, light, peroxide, or radical also, anything. But in this case, what will happen? You will also get the two products, X here
and X here. But in this case, the 1 degree one, ये जो 1 degree वाला होगा, this will be major, and the 2 degree वाला this will be minor. ठीक है, अभी देखिए, अभी आप लोग प्रोडक्ट बनाने पे फोकस कीजिए, कैसे हो रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, वो हम बताएं. ठीक है, समझ, यू कैन आइडेंटिफाई, यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. दो प्रोडक्ट बनाना है आपको, और दैट इज ओनली इफ यू आर हैविंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन. अगर सिमेट्रिकल एल्कीन हुआ तब तो आप किसी भी कार्बन एटम पे जिसपे डबल बॉन्ड है ना, जस्ट आइडेंटिफाई, लेकिन ध्यान रखिएगा, you have to identify this is a double bonded carbon atom, और यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. तो एक बार ब्लू, you will write everything as it is without the double bond, then add the halogen on blue carbon, then add the halogen in the red carbon. दो प्रोडक्ट बन लेंगे. नोहा, समझ में आया बात? yes or no, please tell me, नोहा. Yes, sir. ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, अब यहाँ पे हम या तो HX या फिर HBr, इसमें से कुछ भी यूज करते हैं. देखिए, पेरोक्साइड वाला ना, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr बेसिकली, है ना. HBr में ज्यादा एप्लीकेबल होता है. इन दी अदर इन दी अदर रिएजेंट्स, फॉर एग्जाम्पल HCl ले लीजिए, HI ले लीजिए, जब आप, इन दैट केस दी रेशियो दैट वी गेट ना ऑफ मेजर एंड माइनर, इट इज नॉट वेरी हाई. रेशियो जो मेजर और माइनर का होता है दैट इज 40-60. तो 40-60 को मेजर माइनर नहीं बोला जाता है. अगर आपको 80-90% कोई एक प्रोडक्ट मिल रहा है ना, देन वी कॉल दैट इट इज द मेजर प्रोडक्ट. तो दैट इज ओनली हैपनिंग इन द केस ऑफ Br. ठीक है, इन दिस केस वैसे देखिए आप, सिंस इट इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन, इट डजंट मैटर, कि आप HX के साथ कर रहे हैं या HBr के साथ कर रहे हैं. भाई, बिकॉज इफ यू लुक एट द प्रोडक्ट ना, आप रेड और ब्लू कर लीजिए जरा. दिस इज द ब्लू कार्बन एटम एंड दिस इज द रेड कार्बन एटम. फाइन. अब अगर हम दो प्रोडक्ट भी बना ले, एक बार हमने ब्लू में डाल दिया, लेट अस सपोज वी हैव HBr, तो ब्लू में डाल दिया Br, और एक बार हमने कहाँ डाल दिया, इधर डाल दिया. ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर सेम ना, ये दोनों ही के दोनों क्या है, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन. ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में ये काम नहीं करता है. मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes. Yes, sir. प्लीज राइट दिस डाउन. Raise your hand once you're done. Just give me a second, guys. Mariam and Harsha, raise your hand once you're done. अब आप लोग कुछ प्रोडक्ट्स बनाइएगा and then we will be Sir, done. what if there are two double bonds? Sorry. So what if there are two double bonds?
टू डबल बॉन्ड नहीं समझ में आया आपको, कहाँ पे? Where will the halides be attached if we have two double bonds? दो डबल बॉन्ड अगर हुआ Yes, sir. तो फिर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे फिर, ठीक है? Okay. फॉर एग्जाम्पल ये अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये रहा तो इसमें तो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे आपको, बिकॉज एज यू नो दैट दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज सेम, राइट? बट स्टिल यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस, एक बार आपको पी आर यहाँ पे मिल जाएगा एंड दिस डबल बॉन्ड विल बी एज इट इज, और यू कैन हैव, मतलब इट विल बी कंप्लीट मेस। आपको ऐसा दोनों में बी आर भी लग सकता है, यहाँ पे बी आर और यहाँ पे भी बी आर लग सकता है, देन यू कैन हैव एक बार बी आर यहाँ पे लग रहा है, एक बार बी आर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? सो इट विल बी कंप्लीट मैच। जनरली दो डबल बॉन्ड आज तक हमने किसी सवाल में नहीं देखा, ठीक है? बिकॉज इट इज अननेसेसरी रिएक्शन। एंड आई होप ये हमने बताया ना कि जब आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिले देन इट इज ऑलवेज अ बैड रिएक्शन, राइट? Yes. चलिए दो सवाल कीजिए आप लोग। And let us suppose this is in the presence, this is HBr only. Second is second step में आपके in the presence of peroxide. फिर चार कीजिए, two for dark and two in the presence of peroxide. Send your answers on my WhatsApp.
Let me know if you are having any doubts, guys. Do you know how you have sent the answer? नहीं, हाँ आपने थोड़ा, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। चलिए एक हम आपको करके बता रहे हैं। राइट द प्रोडक्ट, राइट द रिएक्टेंट एज इट इज विदाउट द डबल बॉन्ड। ये सबसे पहली चीज करनी है आप लोगों को गाइस, ठीक है। राइट द प्रोडक्ट एज इट इज विदाउट द डबल बॉन्ड, देन ऐड बी आर ऑन द कार्बन एटम लाइक दिस। फिर बिकॉज हियर वी आर हैविंग टू कार्बन्स ना, तो दोनों कार्बन के लिए करेंगे राइट द रिएक्टेंट एज इट इज विदाउट द डबल बॉन्ड, और फिर दूसरा बी आर यहाँ पे लगेगा। बात समझ में आ रही है ना, ये इन दोनों कार्बन पे लगाना है ना। हाँ Yes, sir. बाकी कीजिए फिर से। यू आइडेंटिफाई इस तरह से ना, रेड और ब्लू कर लीजिए जरा, यहाँ पे भी ऐसे रेड और ब्लू, यहाँ पे भी रेड और ब्लू, ठीक है। लुकिंग एट योर आंसर हर्षा। अच्छा एक और चीज हम यहाँ, सिंस हियर वी आर यूजिंग ओनली एच बी आर, तो फिर आप क्या कीजिएगा, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, 3 डिग्री वाला मेजर। सेकेंड क्वेश्चन हर्षा, जिस करेक्ट पेरोक्साइड के प्रेजेंट में HCl, करेक्ट या वेरी गुड। नो हाँ, डू द सेकेंड वन एंड सेंड मी द आंसर। मेजर माइनर मत कीजिए, आप अब सिर्फ आंसर कीजिए, सिर्फ बी आर लगा के। नो हाँ, सेकेंड वाला करके भेजिए जरा। मरियम यार, कैसे कर रहे हैं आप, डबल बॉन्ड में रहेगा ना, क्यों गलती कर रहे हैं। फिर से कीजिए आप, थर्ड वाला देखिए कैसे किया आपने। थर्ड वाला फिर से कीजिए मरियम। कैन यू सी द मिस्टेक मरियम? Yes, sir. ठीक है, इट्स गुड देन। हाँ
नहीं अच्छा, नोहा नोहा मेजर माइनर हमने कहा था ना नहीं करने के लिए आपको, बिकॉज हमें पता है कि एक बार में एक ही चीज सही हो पाएगी, है ना। ध्यान दीजिए जरा, परऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या हो रहा था, देखिए जरा। परऑक्साइड के प्रेजेंस में जो कम डिग्री वाला दैट इज मेजर। ठीक है, अब आपका प्रोडक्ट सही है, दैट्स फाइन, इसीलिए हम कह रहे थे मेजर माइनर मत कीजिए अभी आप। तो एक तो आपको मिलेगा इस कार्बन आटम पे, तो ये CH3, और यहाँ पे आपके पास Br लगेगा, प्लस एवरीथिंग एज इट इज विदाउट द डबल बॉन्ड, CH3 Br डाल दिया आपने, और फिर दूसरे वाले पे Br लगा दिया। ठीक है, तो दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, सो दिस विल बी मेजर। ठीक है, आपने उल्टा लिख दिया ना, Yes, sir. राइट नो, हाँ। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, एवरीथिंग एज इट इज विदाउट द क्लोरीन। अब बताइए, एक यहाँ पे एक बार लगा दीजिए आप क्लोरीन, और दूसरे बार में यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, हियर विच विल बी मेजर, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस विल बी मेजर। इसमें आपने यहाँ पे Br लगा दीजिए, और दूसरा यहाँ पे Br, बोथ ऑफ दीज आर